Good morning. Good morning. Good Good morning. morning, sir. Good morning. Okay. 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 So I'm guessing like we are clear till now. यहाँ तक कोई डाउट किसी को अगर हो तो just let me know. ठीक है. So now we are supposed to start with the lower limb anatomy है ना. तो अभी तक हमने we are done with the upper limb anatomy है ना. We are done with the bones and all the structures. Along with that, the muscles, their nerve supply, the functioning of the muscles. Along with that, the skull है ना. हमने skull के बारे में बात कर ली and skull के bones and all those things, and along with that the that thing, the triangles of the neck है ना, and the content and the boundaries, all those things of the neck. ठीक है. Now we are starting with the lower limb anatomy. Okay. So before starting, can anyone tell me? I just want your feedback. Ki what are the structures which we can talk about when we use the term lower limb anatomy? Lower limb में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं? Just name the bones. Femur, Okay. tibia, Femur, fibula, tibia, fibula. Okay. patella, Okay, patella. हम्म. उससे पहले भी तो है. hip bone, Uh, हाँ. pelvic, Hip bone. Hip is actually joint. pelvic bone, हाँ, you can say the pelvic or the innominate bones. ओके. एंड ओके, सिर्फ फिबुला तक है या उसके बाद भी कुछ है? बाकी और भी कोई बता. हाँ. tarsals, metatarsals, phalanges. हाँ, देन वी हैव गॉट द टार्सल्स, देन द मेटाटार्सल्स एंड द फेरेंजेस. ठीक है. चलो ठीक है. एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं सेम चीज़ को. तो यहाँ पे है दे हैव शोन इट फ्रॉम द फीमर, बट ऑफ कोर्स वी आर सपोज टू, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लोअर लिम्ब एनाटमी, वी आर सपोज टू स्टार्ट विद द इनॉमिनेट बोन्स. We will leave the sacrum. We won't talk about the sacrum because when we will be Sir, talking about आपकी voice break हो रही है. uh, just give me a second then. um, अभी भी ब्रेक हो रही है. There is some disturbance, sir. Hmm. There is some disturbance. There is some disturbance. Just मैं एक बार लीव करके just let me join it back. एक सेकंड दो मेरे को. Is it better now? Yes, sir, yes. Okay. There are some issues with these applications of Google, I think. मतलब Google Forms में भी कुछ issue है, and इसमें भी I don't know कि चलो ठीक है. Okay, so I was saying that we won't talk about the sacrum when we are talking about the lower, because the sacrum is part of the vertebral column. But apart from that, we will be talking about each innominate bone, which are the bones which participate to make to make each innominate bone, and then about of course, you as you told, the femur, the tibia, fibula, and then we have got the tarsals, the metatarsals, and the phalanges. ठीक है. तो before starting, of course we know we have got one femur, one fibula, one tibia. ठीक है. Can anyone tell me the name of the bones? This we have discussed before. The name of the bones of each innominate. Which bones participate to make each Ilium, innominate? ischium, and pubis. It is ilium, ischium, and pubis. Okay. And then does anyone remember the name of the tarsal bones? जैसे हमने कार्पल्स पढ़ी थी. Talus, calcaneum, टेरेस कैल्केनियस. देन three cuneiform bones, थ्री navicular, यूनिफॉर्म, नेविकुलर एंड वन क्यूबॉइड है ना. and pupa. Yes, हाँ. sir. Okay, then we have got a talus, then we have got a navicular, we have got three cuneiforms, a cuboid, and a calcaneus है ना. तो it means how many we have got Seven seven. हाँ, heartbeats. we have got seven tarsals. ठीक है. But it was eight है ना. We have got eight carpals in the hand, but seven tarsals. So there is one bone that is missing here, or we can say one bone less
in the tarsals as compared to the carpals. तो ठीक है. uh, mm, mm, mm. There does anyone have you heard about the that thing about ट्रिपल आर्थोरेसिस? किसी ने सुना है ट्रिपल आर्थोरेसिस? खैर हम उसके बारे में बात करेंगे आगे, लेकिन हाँ, सुना है ट्रिपल आर्थोरेसिस? In CTEV surgery. Yeah, in CTV we can go for triple arthrodesis. Apart from that, there can be various different conditions also in which you can go for triple arthrodesis. Actually means this we are going to talk about in ortho, but we So can, done at subtalar joint. yeah, the subtalar joint, huh? There are three joints which we actually, the thing is कि first of all let's talk about arthrodesis. Arthrodesis क्या होता है कि we try to fuse different two different articulating bones ना, we try to fuse a particular joint. Now why we need to fuse a joint? Because we know that let's say if there is a condition, let's say if there is CTEV, or if there is any other condition because of which now that particular joint is becoming painful for the person to use, so in that case we can just fuse that particular joint. Of course that is going to hamper the amount of mobility in the foot, but that is going to decrease the amount of pain, and because of that we go for the fusion of the joints. Let's say अगर हमारा फुट में कोई भी, अगर लेट्स से कोई भी फ्रैक्चर होता है, अभी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बट देर इज दिस जॉइंट, इट इज़ कॉल्ड एज शोपार्ट जॉइंट. किसी ने सुना है? CHOPART, और वी कॉल इट एज इंटरटार्सल ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट, है ना? ट्रांसवर्स टार्सल जॉइंट, बट दैट इज मोस्ट कॉमनली common type of fracture that we see in the foot. So let's say if there is any kind of fracture in that particular part, so in that case we see there are two different methods we can apply. Either we can go for the reduction of that particular type of fracture, but once let's say it is properly reduced, and if we have immobilized it for a proper considerable period of time, but after some time we can see that still it is painful for the person. So in that case we would suggest the individual to go for arthrodesis, where we try to fuse those joints. तो वहाँ पे fuse करने के बाद में of course the mobility is decreased, but the foot is now less painful for the person, and ठीक है, मतलब a bit of, you can say, the biomechanics will get altered, but not majorly. In that case we talk about that is basically called as arthrodesis. And there is this surgery that is called as triple arthrodesis, where we try to fuse three different joints. किसी को ध्यान है कौन कौन से joints को हम fuse करते हैं? या फिर आप ये देख के आना. एक्चुअली चलो दो तीन, Talus, हाँ calcaneus, cupum. हाँ, टैलो नेविकुलर, कैल्केनियो नेविकुलर, सॉरी कैल्केनियो नेविकुलर होता है, ठीक है. देन वी हैव गॉट द सब टैलर जॉइंट, दैट इज बिटवीन द टैलस एंड द कैल्केनियस, एंड बिटवीन द टैलस एंड द क्यूनिफॉर्म, आई गेस, है ना? Talus and the cuneiform, talus and the calcaneus, and calcaneo navicular. So these are the three joints which are being fused, and eventually we see that is called as triple arthrodesis. ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. There can be various different type of injuries to the foot or deformities of the foot in which we can go for triple arthrodesis. ठीक है, ओके. तो खैर यहाँ पे हमने we have seen these bones, and we know कि इन bones के बारे में. Okay, so let's now start with the ilium. First of all, of course, as we had talked about this, that this is each innominate bone. This is one innominate bone. Along with another innominate bone and a sacrum, we have got a complete pelvis. So okay. Before talking about anything further, can anyone tell me कि this innominate bone is of which side? Is it the right side innominate bone or the left side innominate bone? अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया इसके बारे में, anterior posterior कुछ भी. Can anyone tell me? Left side. It is, you're saying it is left side. Okay, कोई और try करना चाहे? Right side. Okay, why left side, why right side? Okay, लेफ्ट साइड नहीं है तो राइट साइड नहीं है तो लेफ्ट साइड, ऐसे हो गया. देखो, द थिंग इज कि if we want to decide that whether a particular bone is, जैसे मैंने clavicle में बताया था ना, whether a bone is it belongs to the left side of the body or the right side of the body. In that case we need to figure out first of all you can say the anterior and the posterior part of that bone, and along with that the lateral and the medial side of the bone, है ना?
So here we can see, can anyone tell me कि right now we are looking at the lateral part of this innominate bone or the medial part of the innominate bone, this particular Lateral part. we are having a look at the lateral part. इसके लिए golden rule है that we need to have a look at the acetabulum. If we can have a visual of the acetabulum, in that case easily we can say that that is a lateral side of this innominate bone. Let's say आगे जाके we will see let's say हाँ इस particular image में again this is an innominate bone but we can't see the acetabulum. It means that right now we are having a look at the medial side of the innominate है ना, medial side. This is the medial view of this innominate bone and this is the lateral side of this innominate bone because we can have a look at the acetabulum. Along with that we must know that the pubis it is present anteriorly and the ischium is present posteriorly. Okay, this needs to be remembered. The ischium posteriorly, it means this is the posterior aspect of this person and this is the anterior or the ventral aspect, ventral part of this person. ठीक है, ओके, तो ठीक है, तो इट मीन्स कि अब हमें समझ आ गया कि राइट नाउ वी आर हैविंग अ लुक at the lateral part of this innominate bone and also this is the anterior and this is the posterior part. So now we can say that this person should be facing in this direction ना, इस डायरेक्शन में पर्सन फेस करना चाहिए and it means कि that this is the anterior part of this is the anterior part of this bone and this is the posterior. So we can say that right now we are having a look at the left part of the innominate ना, this is the left innominate bone. Okay, along with that we can see that all these three bones they participate to make this structure that is called as acetabulum. Can anyone tell me ki what is acetabulum? What does acetabulum make? What is the function of acetabulum? Conjugates with the femur. It articulates with the head of femur है ना and makes the which joint? Hip joint. Makes the hip joint है ना. So it okay, so it means कि all these three bones they participate to make the acetabulum and it makes the, you can say, the proximal articulating surface of the hip joint. Okay, ठीक है. Also we can figure out that that okay, we can see that major proportion of this acetabulum is being made by you can say it is being made by the ilium and the ischium, but only a small proportion of this acetabulum the pubis is participating in that. So from that also we can figure out that there are different proportions of these three bones in which they participate to make the acetabulum. Also here we can see this cartilage that is called as the triradiate cartilage. Okay, so triradiate cartilage which is present again in this cartilage, you can say present acting as an adhesion है to maintain the integrity of this joint, and that is the triradiate cartilage. एक ligament होता है. There is some distance towards your side, sir, when you are speaking. Am I not audible? No, sir, you are audible. Huh. But there is some disturbance. There is disturbance. Let me see. Let me just reduce the speed of my this fan. एक सेकंड मैं एक बार लीव करके भी let me join it again and is it better now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. It might be this fan, because of which you might be getting this disturbance. ठीक है, तो हाँ, I was saying that we have got this triradiate cartilage which is present or you can say which is present in the junction between these three bones. But apart from that we have got another ligament that is called as radiate ligament, not the triradiate but that is called as radiate ligament. Can anyone tell me radiate ligament, where is it present in the body? The radiate ligament. किसी को ध्यान में नहीं आ रहा? Radiate ligament. Do you know about a joint that is called as costovertebral joint? Costovertebral joint के बारे में सुना है? ठीक है, तो मैं एक बार वही दिखा देता हूँ.
radiate ligament, no? So okay, here we can see that this this joint is called as the costovertebral joint, okay? So of course this is supposed to be the joint of the rib with its corresponding vertebra. We are going to talk about this as well in the further classes when we will be talking about the thorax and the ribs. So in that case we will see that how we are supposed to describe a particular rib as its whether this rib corresponds to this particular vertebra or this vertebra, how we are supposed to say that. So we are going that is a different topic, but here we can see the at the junction of the rib and its corresponding vertebra, we can see we have got a set of three ligaments. So we can divide these ligaments into three different bands, okay? And that is called as radiate ligament. This particular set of ligament is called as the radiate ligament, and that is present at the costovertebral joint, okay? Of course posteriorly on the posterior aspect of the rib, that is called as costovertebral joint, okay? No, that is called as the radiate ligament, okay? Radiate ligament. Here we can see here we can see this is called as the triradiate cartilage. Don't get confused between these two things, okay? That is this is triradiate cartilage in the acetabulum, that was radiate ligament, okay? ठीक है. And now let's talk about the ilium. तो ilium में अगर हम बात कर रहे हैं तो we can see of course this is the biggest among all these three bones which are present in to make the innominate bone. We can see that the lower part of the ilium, it participates to make the upper part of the acetabulum, and along with that we can see we have got a big this structure that is called as the acetabular as we can call it the acetabular crest or the not the acetabular, we can call it as the iliac crest है ना, iliac crest हम इसको बोलते हैं, या फिर iliac wing हम इसको बोल सकते हैं, we can call it as iliac wing, ठीक है? Okay, so let's start with the structure of the ilium. So first of all we can talk about the upper part. As I said this we can talk about the upper part of the ilium and then the lower part of the ilium. So here we can see कि the lower part of the ilium, it fuses with the ischium and the pubis and makes 2/5 of the acetabulum, ठीक है? The lower part of the ilium, this we can see here ना कि the lower part of the ilium, it makes 2/5 of the acetabulum, ठीक है? Likewise we can see here also the ischium is also it is making it makes 2/5 of the acetabulum, but the pubis, it makes only 1/5 of the acetabulum. It means the lowest amount of participation in the acetabulum is by the pubis bone, okay? It makes only 1/5 of the whole acetabulum. I hope everyone can understand this 1/5 and 2/5 thing कि why 2/5 है ना, मतलब 2 plus 2 4, that is plus 1, that is 5 है ना. So it means that all these three bones make the complete acetabular structure, but 2/5 is being made by the ilium and 2/5 made by the ischium and only 1/5 by the pubis, okay? And okay, so we can say that the lower part of the ilium makes upper border of the acetabulum and makes 2/5 of the acetabulum. If we talk about the upper part of the ilium, so here we can see we have got so first of all we have got the ASIs, okay? We have got the ASIs, that is anterior superior iliac spine, that is this particular point. Can anyone tell me any muscle attachment on the ASIs? Anyone muscle which is attached on the ASIs, that is किसी को ध्यान में है? Sartorius. Sartorius, हाँ, Sartorius has its attachment on the ASIs. Okay, here we can see another this prominence that is called as AIIS, that is anterior inferior iliac spine. This was the anterior superior iliac spine. This is anterior inferior iliac spine. We can see the quadriceps and all those muscles getting attached on the AIIS, okay? But we can see the sartorius that is attached on the ASIS, and we have discussed this. Can anyone tell me the insertion of the sartorius? The insertion of the sartorius. This we have discussed. Tibia. On tibia, at a particular junction, na? Is tubercle. Not the Gertis tubercle. The Gertis tubercle पे तो हमारा उसका होता है ना IT band is its attachment on the Gertis tubercle. Gertis tubercle is present on the posterolateral part of the tibia, not the Gertis tubercle, but on the pes anserinus region, na? We have discussed this pes anserinus region. We have got three muscle attachments, na? They are the sartorius, along with that two other muscles, the semitendinosus and another one muscle, na? एक और muscle है. But we can see that gracilis. So, but we can see that the sartorius has its insertion on the pes anserinus region, that is present on the
inferior medial aspect of the patella, you can say. ठीक है? Okay, I hope we are clear till now. Okay, sir. ठीक है? Gerdy's tubercle पे it is present on the proximal and lateral aspect of the tibia, and we have got the attachment insertion of the IT band on on the Gerdy's tubercle. And IT band is coming from which muscle? Can anyone tell me? IT band Gluteal. from TFL, na? From TFL. That is tensor fascial ladder, na? TFL give its you can say this IT band is coming from a muscle that is called as TFL. ठीक है? Along with some aponeurosis from the gluteus maximus, we'll talk about that. But okay, ठीक है. So, but here we can see the sartorius is getting its insertion on the pes anserini region on the inferior medial aspect of the knee, or you can say proximal and medial part of the tibia. So we have talked about okay, so this is the ASIS. Then we can, right now we are supposed to talk about the upper part of the ilium. Okay, we have talked about the lower part of the ilium. Now we are supposed to talk about the upper part of the ilium. So we can start it. We can start it from the ASIS. Okay, then we can see we have got a long ventral segment. We have got a long ventral segment like this one. Okay, here we can see we have got a long ventral segment that makes more than 2/3 of the upper border of the ilium. Right now we are supposed to talk about the upper border of the ilium. So we can see in the anterior most part we have got the ASIS. Then we have got a long ventral segment which makes more than 2/3 of the upper border. Then we have got a small dorsal, a short dorsal border. And then we have got the PSIS, that is again that is posterior superior iliac spine. Okay, so we have got an ASIS, then a long ventral segment, that is then a short dorsal segment, this one. Okay, long ventral segment, short dorsal segment, and the PSIS. Okay, so we can talk about these four structures which are making the upper border of the ilium. Okay, and we have talked about the lower border of the ilium. Are we clear till now? यहाँ तक हमें clear है. We have just talked about the two ends of the ilium, the upper end and the lower end. यहाँ तक Yes, just sir. give me a feedback. हाँ, okay, I hope everyone is listening. सब सुन रहे? Yes, sir. ठीक है, राम्या आप सुन रहे हो, बाकी सब? अक्षता, Yes, sir. मनीष, प्रतीक्षा? Yes, sir. ठीक है, Sir. ठीक है, ओके, ओके, ठीक है, great. ठीक है, so we have talked about the two ends, the upper end and the lower end. Now let's talk about the borders. So now this thing is important, the borders, and then we'll be talking about the surfaces of the ilium. Okay, right now we are concerned with the ilium only. We can see we have got the pubis as well as the ischium also here, but right now we are concerned only with the ilium. So first of all, let's talk about the borders. So borders में we can see here we have got this. So right now we have talked about the upper border. The upper border we can see, or the upper end we can say that we have got an ASIS, then long ventral segment, a short dorsal segment, and then a PSIS. But if we talk about the borders of the ilium, so we can see that we have got an anterior border, we have got a posterior border, and along with that we have got another this border that is present on the medial aspect of the ilium. We are going to talk about this, but first of all let's talk about the anterior and the posterior borders. So on the anterior border we can see that of course the first thing that we are supposed to talk about is the ASIS. So this is the ASIS. Then we can see we have got a notch, a small notch here. Then we can see the AIIS, that is anterior inferior iliac spine. And then we can see we have got this acetabulum. I hope everyone can just have a look at the acetabulum. Of course it is not visible that properly because right now we are having a look at the medial aspect of the innominate bone or of the ilium. But we can say that if we are talking about the anterior aspect of this innominate bone or of the ilium, we can have a look at the ASIS, then a notch, and then AIIS, and then we can have a look at the acetabulum. Likewise, if we have a look at the posterior aspect of the, or you can say posterior border of the ilium, in that case we are supposed to talk about first of all the PSIS. Okay, the PSIS. Then we have got the PIIS. Okay, we have first of all the posterior superior iliac spine. Then we have got another here this structure that is called as PIIS. Okay, that is posterior inferior iliac spine. Then we have got this big notch that is called as the greater sciatic notch. Then the ischial spine, then a lesser sciatic notch, and then it ends up on the obturator foramen. So this foramen is called as the obturator foramen. We will be talking about the structures which pass through the obturator foramen,
Also we will see that there are certain ligaments which are attached on the ischial spine. There are basically two ligaments. एक होता है हमारा sacrospinous ligament and another one is sacrotuberous ligament. So we will see how these two ligaments are attached on the sacrum and on these parts of the innominate bone. And then we will see how these ligaments, let's say यहाँ पे एक ligament ऐसे sacrum तक जा रहा है. So we can see that along with this notch, that ligament, the ligament and the notch, they together they make a foramen, है ना, and that is called as the greater sciatic foramen. And then another ligament we have got that makes a smaller foramen, that is called as lesser sciatic foramen. Okay, so we'll be talking about those foramens when we will talk about the sacrospinous and the sacrotuberous ligament. But right now we can see we have got a greater sciatic notch and a lesser sciatic notch, and a spine between them, that is called as the ischial spine. And this ends up making the obturator foramen. This is called as the obturator foramen. I hope till now we are clear. Yes, sir. The anterior border, okay, and the posterior border. Along with that, talking about the medial border, on the medial side we have got this line that is called as iliopubic eminence. So here we can see this line, it starts from the ilium and goes all the way up to the pubis. This is the pubis bone, right? This is the anterior aspect of this bone. And we can see that we have got the pubis on the anterior aspect of the innominate bone and the ischium on the posterior aspect. Okay, so we can call this particular border, this line, as the iliopubic eminence. या फिर इसका दूसरा नाम जो होता है, that is called as arcuate line. It is also called as the arcuate line, or you can say simply the medial border. ठीक है, we have got this medial border or the arcuate line or the iliopubic eminence. I hope till now we are clear. ये line सबको clear है, ये border. Yes, sir. ठीक है, this one ठीक है, this border. We can have a look at this border here also. ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा clear है. Okay, and just to locate this line, this arcuate line, we are supposed to have a look at this innominate bone from the medial side. Okay, we can't see the acetabulum right now. It means that this is the medial aspect of this bone, and here we can easily figure out that this line that starts from the ilium and goes all the way up to the pubis, that is called as the iliopubic eminence or the arcuate line. Okay, that you can call it as the medial border as well. So we have talked about the anterior border, we have talked about the posterior border, okay, the greater sciatic notch and the lesser sciatic notch, okay, and the ischial spine. And then we have talked about the medial border as well, that is called as the arcuate line. Okay, so okay, till now I think we are clear. Now there is a significance of this arcuate line. Arcuate line क्या कर रहा होगा? Of course, we can, if we have a look at the surfaces of the ilium. First of all, on the lateral side, simply we can see we have got this surface that is called as the lateral surface, or you can say the gluteal surface, because we have got this gluteus minimus and the gluteus medius attached on the lateral surface. Along with that, on the medial aspect of the ilium, we can see that we have got two different surfaces, and these two different surfaces are being divided by this line that is called as the arcuate line. Arcuate line divides the medial aspect of the ilium into two different surfaces. Okay, this anterior one that is called as the iliac surface, and along with that this posterior surface, okay, that is called as the sacropelvic surface. Okay, first of all, on the lateral aspect we have got this whole surface that is called as the gluteal surface. Why gluteal surface? Because we have got the gluteus medius and the gluteus minimus attached on this particular part of the ilium, and that's why it is called as the gluteal surface, and it is present on the lateral aspect of the ilium. Can anyone tell me the function of the gluteus medius and the gluteus minimus? इनका function क्या होता होगा? Extension. Hip No, abduction. extension. हाँ, it is abduction. ना, it is hip abduction. Okay, so but it is does it provide hip abduction only in the non-weight bearing position, or even in the weight bearing also? Let me frame the question again. कि let's say if we say that the gluteus medius and the gluteus minimus, they provide hip joint abduction, so are they supposed to provide hip joint abduction only in the non-weight bearing of the leg when we are not bearing any weight on the leg? क्या उसी condition में ही gluteus medius and gluteus minimus abduction provide करेगा hip joint पे, or are they supposed to provide
provide hip abduction even in the weight bearing position also? In weight bearing also, sir. Weight bearing also, but how weight bearing? आई होप एवरीवन गॉट द क्वेश्चन. क्वेश्चन सबको समझ आया? एक बार मेरे को सबसे हाँ सुनना है. आई जस्ट वांट टू गेट अ फीडबैक सबसे कि सबको क्वेश्चन समझ आ रहा है. मैं नाम नहीं लेना चाहता बट It's ओके आई होप सबको क्वेश्चन समझ आया. ठीक है. ओके ठीक है कि that the hip abductors are they supposed to provide hip abduction only in the non weight bearing or even in the weight bearing. ठीक है. Okay, so Vital, as you said that it is it can provide hip abduction even in the weight bearing. Can anyone tell me any example of that कि जहाँ पे weight bearing में hip abduction provide कर रहा होगा hip abductors या फिर gluteus medius and gluteus minimus? Have you heard about Trendelenburg sign? it's working. ओके ठीक है. दैट इज ओके. तो ट्रेंडलबर्ग साइन ठीक है. ओके तो ट्रेंडलबर्ग साइन क्या होता है? ट्रेंडलबर्ग साइन में ये है ना कि इट मीन्स कि लेट्स से इफ माय लेफ्ट साइड हिप एबडक्टर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली and first of all if we are talking about Trendelenburg sign, the person is supposed to be in the unilateral stance. We can't talk about Trendelenburg sign by the person being in the bilateral stance. Always the person is supposed to be in the unilateral stance. Only then we can talk about the Trendelenburg sign. Now let's say if my left side hip abductors are not working properly, so in that case if I am standing on my left leg in the unilateral stance, there is a tendency of the pelvis to drop from the right side. ठीक है. तो in that case I can say ना कि इसको मुझे इमेज से दिखाना पड़ेगा. just give me a second. Trendelenburg. Okay, just have a look at the functioning of these structures here. Okay, तो चलो इसी इमेज में देख लेते हैं. कोई बेटर इमेज है? नहीं, चलो इसी में देखते हैं. चलो ठीक है. ओके, यहाँ पे ये दिस इज अ बेटर इमेज. तो here we can see first of all when we are supposed to talk about the Trendelenburg sign, you will always look that the person is in the unilateral stance. यूनिलेटरल स्टांस किसी भी पोजीशन में हो सकता है ना. वी टॉक अबाउट ट्रेंडलबर्ग गेट एज वेल, है ना. हम ट्रेंडलबर्ग गेट भी टर्म यूज करते हैं. ऑफ कोर्स व्हेन द पर्सन इज वॉकिंग, इन दैट केस एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स द पर्सन इज इन यूनिलेटरल स्टांस ना. जब राइट लेग पे हम वेट बेयर कर रहे होते हैं, इन दैट केस मतलब यू कैन से राइट लेग व्हेन द राइट लेग इज इन द स्टांस फेज एंड इन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट द लेफ्ट लेग इज इन द स्विंग फेज, है ना. एंड इसका अपोजिट हमें देखने को मिलता है आगे. तो इट मीन्स कि at a given stance at you can say in majority part of a gate you can say कि एक foot जो है that is in the swing phase and another foot जो है that is in the stance phase. Now the thing is कि here in the Trendelenburg sign we are supposed to talk about the drop of the pelvis. अब pelvis drop कैसे होता होगा? Let's say अगर जैसे हम इस केस में देख रहे हैं, here we can see it is a normal condition. Now the person is bearing weight on the right leg and the left leg is lifted, है ना. Left leg is in the non weight bearing position and we can see that the pelvis doesn't drop at any side, ठीक है. And that is called as normal. That is normal. That is the normal you can say functioning of the pelvis, or you can say normal functioning of the hip abductor. लेकिन let's say for an instance let's remove this particular muscle. इस hip abductor को हम remove कर देते हैं. Okay, and again the person is in this position only. डोंट यू थिंक बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जब ऑफकोर्स इसके ऊपर जब काम कर रही है, डोंट यू थिंक कि ये जो पूरा पेल्विस है इट शुड ड्रॉप फ्रॉम दिस साइड अराउंड दिस पर्टिकुलर हिप जॉइंट. ये सबको समझ आया? या फिर इसका ओके इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको बताता हूँ. आई थिंक सबने जैसे फोटो फ्रेम देखा होगा ना. फोटो फ्रेम को हम जब वॉल पे हैंग करते हैं, हम कैसे हैंग करते हैं? विथ 2 नेल्स ना. कभी भी एक नेल से तो नहीं करते. एक नेल से भी कर सकते हैं छोटे वाले को सेंटर में, बट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल जहाँ पे हम 2 नेल लेते हैं, एक राइट एंड एक लेफ्ट. ठीक है. उस केस में जस्ट रिमूव 1 नेल, एक नेल को आप हटा दो, तो डोंट यू थिंक कि वो जो फोटो फ्रेम है दैट विल ड्रॉप बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. एक ड्रॉप कर जाएगा ना. ठीक है. दैट विल ड्रॉप इस साइड से, एक साइड से ड्रॉप कर जाएगा एंड ड्रॉप दूसरे नेल के अराउंड करेगा. जिस नेल पे वो अटका हुआ है उस नेल के अराउंड इट विल ड्रॉप ऑन द अपोजिट साइड. यही होगा.
आई होप एवरीवन कैन जस्ट पिक्चराइज Yes, sir. इसको मैं इस तरह से अगर दिखाऊं तो वी हैव गॉट दिस फोटो फ्रेम ना। अब मैं कह रहा हूँ कि ये फोटो फ्रेम दो जगह से पहले वॉल पे हैंग था, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि वो एक जगह से हमने एक नेल हटा दिया, तो डोंट यू थिंक कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट विल फॉल लाइक दिस, इट विल ड्रॉप लाइक दिस। अब यहाँ पे अगर अगर मैं ये राइट साइड है ये लेफ्ट साइड है, तो मैं बोल सकता हूँ दैट दिस फोटो फ्रेम हैज ड्रॉप्ड ऑन द राइट साइड अराउंड द लेफ्ट साइड ना, और यू कैन से अराउंड द नेल ऑफ द लेफ्ट साइड इट हैज ड्रॉप्ड ऑन द राइट साइड। यही हो सकता है, Yes, sir. ठीक है। सेम सिनेरियो, ठीक है, सेम सिनेरियो आप यहाँ पे लगा के देखो। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि लेट्स से हमने इस हिप एबलेटर को अभी रिमूव कर दिया, तो इन दैट केस वी कैन सी because of gravity this pelvis, because on the right side of course we have got this stable base now, we have got the person is bearing weight on the right side, so right side there is no chance of any dropping of this pelvis, but on the left side there is no stability na, because the person has lifted the leg है ना। so in that case we can see simply this pelvis will drop on the left side around the right hip joint। समझ आया सबको ये लाइन? it will drop on the left side around the right hip joint when when this abductor is absent. Now we are saying, now we say that we have added this hip abductor also, and now it is providing hip abduction. How we will come to that कि hip abduction कैसे provide कर रहा है, but we can see simply that this hip abductor it contracts and it is trying to bring the pelvis towards itself, ताकि ये जो pelvis है ये neutral position में रहे। सबको समझ आया? ये जो हिप एबडक्टर है नाउ इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग है ना, इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट कि ये जो ड्रॉप्ड पेल्विस है इस ड्रॉप्ड पेल्विस को खींच के अपनी तरफ लेकर आए है ना, इसको इसको इट विल पुल दिस पेल्विस टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड इट ट्राइज टू ब्रिंग द पेल्विस बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। And likewise we can say that is the reason why, because of this hip abductor, this pelvis is in neutral position even though the person is in the unilateral stance. But here we can see, let's say this hip abductor on the side of the weight bearing leg is paralyzed, let's say है ना, अगर if it is not working efficiently, in that case we can see that the tendency of this particular muscle to bring the pelvis towards itself, that is lost, and in that case the pelvis will drop on the non weight bearing side because of the gravitational force। आई होप सबको समझ आया ट्रेंड लुम्बर्ग Yes, साइन, sir. ठीक है। ओके, नाउ हाउ वी कैन से कि जब ये जो हिप एबडक्टर है दिस ग्लूटियस मीडियस लेट्स से व्हेन इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग इट इज प्रोवाइडिंग हिप जॉइंट एबडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम हिप एबडक्शन की बात करते हैं तो इन द नॉन वेट बेरिंग स्टांस, तो इन दैट केस वी कैन से लेट्स से दिस पर्सन हैज लिफ्टेड दिस लेग इज लिफ्टेड है ना, तो if this person tries to bring this leg away from the midline, in that case we will see that is called as hip joint abduction है ना, इस hip joint का abduction। it means again अगर मैं same definition को फिर से बताऊं कि if we talk about let's take a reference of the shaft of the femur है ना, and let's say that the shaft of femur is coming towards the iliac wing, तो उसी को तो हम hip abduction बोलेंगे ना। when the shaft of femur is going away from the midline, or you can say when it comes towards this part of the ilium, let's say है ना, if it is coming towards this part of the ilium, or in other terms you can say the angle between these two structures are getting decreased, this angle is decreasing, so in that case we can call it as hip joint abduction। just let me know कि सबको ये point Yes, समझ sir. आ रहा है कि नहीं, Yes, ठीक sir. है ना। तो we can say कि if the shaft is going away from the midline, or you can say if the shaft of the femur is coming towards the ilium, that is called as hip joint abduction। And on the contrary you can say कि if the shaft of the femur is stable, and if the ilium is coming towards the shaft of femur, again that can also be called as hip joint abduction ना। दोनों को हम hip joint abduction बोलेंगे, चाहे ilium is moving towards the shaft of femur or the femur is moving towards the ilium, both can be called as hip abduction। No, sir. क्यों? Why no? Second one will be pelvic drop, no, sir? हाँ, दोनों देखो, दोनों में pelvic drop हो रहा है, लेकिन right now we are concerned with the hip joint। तो hip joint पे क्या होगा? hip joint पे तो abduction movement ही तो होगा ना। देखो here we can see ये हमारा hip abductor है,
first of all let's say कि this particular leg, this leg is in non weight bearing position, ये leg हमारा non weight bearing में है, let's say, ठीक है. उस केस में we say that this attachment of the ilium, this attachment of the gluteus medius is the origin and this is its insertion. And उस केस में of course in that case this muscle is supposed to provide its action on the femur, and it tries to bring the femur away from the midline, or you can say it tries to this, the contraction of this muscle tries to bring the femur towards the ilium. The shaft of the femur is coming towards the ilium. उसी को तो हम हिप जॉइंट एबडक्शन बोल रहे हैं ना. या फिर मैं ये बोलता हूँ कि अगेन ये लेग जो हमारा है, अब दूसरा केस मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला लेग जो है ये हमारा वेट बेरिंग में है, एंड देर इज अगेन दिस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल in which it is trying to bring the ilium towards the femur. उसको भी तो हम हिप एबडक्शन ही तो बोलेंगे ना. चाहे फीमर आए टुवर्ड्स द इलियम या इलियम जाए टुवर्ड्स फीमर, दोनों को तो हम हिप एबडक्शन ही बोलेंगे. नहीं समझ आया? नहीं आया तो जस्ट लेट मी नो. नहीं आया तो समझ दो. Sir, we understood that, but I didn't understand why if pelvis moves towards the femur, we call it hip abduction. See, if we talk about hip abduction simply means the movement at that particular joint, the movement at this hip joint in which either this iliac crest moves towards the femoral shaft, or the femoral shaft moves towards the iliac crest. दोनों को we will call it as hip abduction. दोनों केसेस में we will call it as hip abduction. समझ आया? ओके सर. हाँ आया. ठीक है. तो दोनों सर केसेस को हाँ यहाँ पे फीमेल का मूवमेंट नहीं हो रहा है ना. नहीं, इस केस में हाँ. अब मैं बोल रहा हूँ कि ये पर्सन अब राइट लेग के ऊपर वेट बेयर कर रहा है, एंड नाउ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ग्लूटियस मीडियस इज ट्राइंग टू ब्रिंग दिस इलियम टुवर्ड्स द शाफ्ट ऑफ द फीमर. बिकॉज फीमर तो हमारा स्टेबल है, बिकॉज द पर्सन इज बेयरिंग वेट ऑन दिस लेग, तो फीमर तो कहीं मूव नहीं करेगा अभी. लेकिन देर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हिप एबडक्टर, and we are calling it as hip abductor, and it means that it is supposed to provide hip abduction. But in this case we can say that the iliac crest is moving towards the shaft of femur and not the femur moving towards the ilium. But उसको भी तो हम hip abduction ही तो बोलेंगे ना. हाँ ओके सर. ओके. आई होप सबको समझ आया. मुझे आंसर नहीं मिल रहा सबसे. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. बट इस केस में जहाँ पे लेग वेट बेयरिंग में है, and now the contraction of this hip abductor is trying to bring the iliac crest towards the femur, and eventually it is trying to keep the pelvis in a neutral position. इस केस में hip abductor का origin कहाँ होगा, कोई बता सकते हैं? जहाँ पे weight bearing में हम हैं, and the contraction of the abductor is trying to bring the pelvis towards the femur. इस केस में hip abductor का origin कहाँ होगा and insertion कहाँ होगा? फीमर पे origin होगा ना, and the insertion will be on the iliac crest, because now in this case it is showing its action on the iliac crest and not on the pelvis. I hope सबको समझ आ रहा है. नहीं समझ आया तो just let me know. ठीक है. बट दोनों केसेस को हम नहीं आया. नहीं समझ आया. किसको नहीं समझ आया? मेरे को. ओके ठीक है. देखो अगेन मैं एक बार फिर से इसको बताता हूँ. हमारा ये छूट है वैसे, चलो कोई नहीं. हम ये देखो एक चीज़ देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हिप जॉइंट एबडक्शन की अगर हम बात करना चाह रहे हैं, इन डैट केस देयर आर टू सिनेरियोज. आइदर या तो ये शाफ्ट इट मूव्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द इलियक क्रेस्ट, उसको हम हिप जॉइंट एबडक्शन बोलेंगे. ये समझ आया? हाँ. ठीक है. या तो जो कि सिंपली हम हिप जॉइंट एबडक्शन या किसी भी जॉइंट का एबडक्शन अगर हम बोलते हैं, तो इन दैट केस वी सिंपली से कि अराउंड दिस हिप जॉइंट. आप माइक ऑफ कर दोगे, डिस्टर्बेंस आ रहा है. हाँ. तो इस हिप जॉइंट के अराउंड अगर ये शाफ्ट ऑफ फीमर इफ इट मूव्स टुवर्ड्स द, लेट्स से मैं डेफिनेशन नहीं बोल रहा हूँ कि टुवर्ड्स द इलियक क्रेस्ट, आई एम जस्ट टेकिंग टू रेफरेंस पॉइंट्स ताकि आपको समझ आ जाए. ठीक है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि इफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर मूव्स टुवर्ड्स the iliac crest, in that case we will say that is hip joint abduction. Or we can say if this iliac crest moves towards the shaft of the femur,
In that case also we can say that that is hip joint abduction. दोनों को हम hip joint abduction तो बोलेंगे ना. हाँ. Hmm, इसको मैं आई डोंट नो मैं कैसे दिखाऊं बट एक बार देखो लेट्स से ये हमारा ये दिस इज द पेल्विस एंड ये हमारा फीमर है. ठीक है, मैं कह रहा हूँ या एक एक सिनेरियो जहाँ पे फीमर को मैं अवे अवे फ्रॉम द मिड लाइन से अवे लेके जा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज हिप एबडक्शन. दूसरा सिनेरियो है जब ये लेग जो है ये फीमर जो है ये वेट बेरिंग में है एंड इस केस में पेल्विस लिफ्ट हो रहा है, इस साइड से पेल्विस लिफ्ट हो रहा है, तो इसको भी तो हम हिप जॉइंट एबडक्शन तो बोलेंगे ना, चाहे ये हो हाँ सर. या चाहे ये हो, है ना. दोनों केस में हमारा मोटिव है कि ये पार्ट एंड शाफ्ट ऑफ द फीमर जो है वो एक दूसरे के पास आना चाहिए, इसको हम हिप एबडक्शन बोलेंगे. अब चाहे ये वाला एक्शन हो या चाहे ये वाला एक्शन हो, दोनों दोनों हिप जॉइंट एबडक्शन में आते हैं. ठीक है, तो इसलिए अब हम बोल सकते हैं कि या तो पेल्विस पेल्विस लिफ्ट हो इस साइड से, है ना, उसको भी हम हिप हिप एबडक्शन बोलेंगे, या फिर फीमर अगर अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाए या फिर टुवर्ड्स द इलियक क्रस्ट जाए उसको भी हम हिप एबडक्शन बोलेंगे. एंड या फिर हम ये बोल सकते हैं ना कि लेट्स से इस केस में हम देख रहे हैं कि पेल्विस ड्रॉप हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे टर्म यूज़ करता हूँ दैट दिस पेल्विस ड्रॉप्स ऑन द लेफ्ट साइड अराउंड राइट हिप जॉइंट एंड देयर इज दिस एडक्शन मूवमेंट एट द राइट हिप जॉइंट. सही बोला मैंने? राइट हिप जॉइंट के अराउंड, ठीक है, राइट हिप जॉइंट के अराउंड एडक्शन मूवमेंट हो रहा है. अब मैं एबडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एडक्शन. तो या तो ये पेल्विस इफ इट मूव्स टुवर्ड्स द शाफ्ट ऑफ दिस फीमर, या फिर द शाफ्ट ऑफ दिस फीमर मूव्स टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द इलियम, दोनों को हम एडक्शन बोलेंगे ना. तो इट मीन्स इस केस में देर इज एडक्शन मूवमेंट दैट इज हैपनिंग अराउंड द राइट हिप जॉइंट. डजेंट मैटर कि चाहे वो वेट बेरिंग में हो कि नॉन वेट बेरिंग में हो, दोनों में हम एडक्शन बोलेंगे. बट ऑफकोर्स द रीजन्स कैन बी डिफरेंट कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द हिप एबडक्टर ऑन दिस साइड देर इज एडक्शन मूवमेंट. तो इन दिस केस वी कैन से दैट देर इज एडक्शन मूवमेंट अराउंड द राइट हिप जॉइंट एंड द ड्रॉप ऑफ द पेल्विस इज ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, एक बार इसको फिर से आप फिर से एक बार ध्यान से देखना. क्या चीज़ समझ में आ गया. आगे समझ में? ठीक है, एक बार इसको फिर से आप ट्राई करना. ठीक है, एंड उसके बाद इस पे हम फिर से आएंगे आगे जाके ट्रेंडनबर्ग साइन पे. ठीक है, बट दिस वाज इंपॉर्टेंट. ट्रेंडनबर्ग साइन एंड सेम हम देख सकते हैं ट्रेंडनबर्ग गेट. तो वॉक गेट के टाइम पे भी सेम चीज़ है. जब हम लेट्स से गेट का वो वाला फेज जिसमें हम इस राइट लेग जो है वो स्टैंड फेज में है, लेफ्ट लेग जो है वो स्विंग फेज में, तो उस केस में हमें पेल्विक ड्रॉप देखने को मिलेगा ऑन द साइड जो कि फुट हमारा स्विंग फेज में, बिकॉज देर इज नो सपोर्ट ऑन दिस साइड एंड द सपोर्ट जो कि हमारा हिप एबडक्टर का था इस साइड पे वो वीकनेस में या पैरालाइज स्टेट में, तो इसकी वजह से. ओके, सो ठीक है, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द सर्फेसिस. तो वी हैव टॉक्ड अबाउट द ग्लूटियस मीडियस एंड द ग्लूटियस मिनिमस का अटैचमेंट on the gluteal surface. Apart from that we can talk about two more surfaces, the iliac surface and the sacropelvic surface. Okay, iliac surface we can see this we are talking about the medial aspect, medial side of the ilium, and यहाँ पे हम देख सकते हैं कि iliac surface, or you can call it as iliac fossa also, there is one muscle that is present here. Can anyone tell me? एक muscle हमारी present होती है on the iliac fossa. iliacus है ना, हाँ iliacus, that is the iliacus. ठीक है, तो there are certain hip joint flexors ना, iliacus and then psoas major, psoas minor. ठीक है, तो iliacus and psoas major have their insertion on lesser trochanter of the femur. ठीक है, फीमर में वी कैन सी वी हैव गॉट ग्रेटर ट्रोकेंटर इन द लेसर ट्रोकेंटर, लाइक जस्ट द वे वी सॉ द ग्रेटर ट्यूबरकल एंड द लेसर ट्यूबरकल इन द ह्यूमरस, वी हैव गॉट द ग्रेटर ट्रोकेंटर इन द लेसर ट्रोकेंटर. ऑन द लेसर ट्रोकेंटर वी हैव गॉट द अटैचमेंट इंसर्शन of the iliacus and which one, the psoas major na, but the psoas minor has its insertion on the ligament that is called as inguinal ligament. Okay, we are going to talk about the inguinal ligament आगे जाके, लेकिन we will see we have got the insertion of we have got the iliacus muscle. ठीक है, iliacus muscle that is present in the iliac fossa, that is the iliac surface of the ilium, and that is present on the medial side. Also, just we can say just posterior to this line, can anyone tell me the name of this line? इस line का नाम क्या था? Arcuate line ना, or the iliopubic eminence. So just on the dorsal surface, dorsal you can say aspect, or the of this arcuate line, we can see this whole structure that is called as the sacropelvic surface. In the sacropelvic surface we can talk about three different parts. First of all, we have got this surface. Can anyone tell me कि इस surface के साथ में attachment किस bone का होता होगा?
This is the medial Sacrum. artery. Yeah, of course, this is the sacrum, na. So we can see this L-shaped, more or less L-shaped structure होता है, and that surface is called as auricular surface. ठीक है, that is called as auricular surface. ये arcuate line, don't get confused. ये arcuate दोनों A से start हो रहे तो इसलिए confuse मत होना. ये arcuate line है, that is the iliopubic eminence or the medial border, and this surface is called as the auricular surface of ilium. Likewise, we have got another auricular surface of sacrum, and both the auricular surface they attach to each other to make which joint? To make sacroiliac joint, है ना, to make the sacroiliac joint. ठीक है, the auricular surface. Right now we are talking about the surfaces which are parts of the sacropelvic surface. ठीक है, sacropelvic surface on the posterior aspect of the arcuate line, the auricular surface. Along with that, we have got this smooth pelvic surface and this rough surface that is called as iliac tuberosity. We can call this region as the iliac tuberosity. We have got the auricular surface and we have got this smooth pelvic surface. These are, you can say, the sub parts of the whole, this whole surface. इसको हम collectively we are calling it as the sacropelvic surface. ठीक है, and specifically this region is important, that is called as the auricular surface, which give its attachment with the sacrum and makes the sacroiliac joint. And we have talked about the iliac fossa or the iliac surface on the medial side, on the anterior aspect of the arcuate line, and on the lateral side we have got this region that is called as the gluteal surface. We have got this gluteus medius and the gluteus minimus attachment here. ठीक है, यहाँ तक clear है? The three borders, anterior, posterior and the lateral, sorry the medial, ठीक है, arcuate line, and three surfaces. ठीक है, iliac surface, sacropelvic surface, and on the lateral side we have got the gluteal surface. यहाँ तक clear है? Yes, sir. ठीक है, इससे पहले हमने बात करी थी अपर एंड लोअर एंड्स. ठीक है, एंड उससे पहले हमने जस्ट इलियम को एज अ होल देखा था. ठीक है, एंड इलियम पार्टिसिपेट्स टू मेक 2/3 ऑफ द एसिटाबुलम. ठीक है, दिस इज द इलियम. ठीक है, दिस इज द विंग ऑफ इलियम. वी कैन से राइट नाउ वी आर हैविंग अ लुक at which surface, at the lateral surface. Yeah, this is the lateral surface of the ilium, and this is the, or we can call it as gluteal surface of the ilium. ठीक है, this is the upper border, this is the anterior border, this is the posterior border, and on the medial side we have got the arcuate line, we have got the iliac surface, and we have got the sacropelvic surface as a whole. ठीक है, this is the auricular surface of the sacropelvic surface of ilium. ठीक है, I hope we are clear till now. ठीक है, okay. Now since we have talked about the ilium, the thing that, or you can say the clinical relevance of that is to measure the true and the apparent leg length. Can anyone tell me about true and apparent leg length? नाम सुना है? Please use it for हाँ. to determine LLD, leg length disparity. हाँ, okay. In the case of true length, we measure it from anterior superior iliac spine to medial malleolus. Yeah. In the case of apparent length, we will measure it from umbilicus to the medial malleolus. Okay. Now the question is कि why the medial malleolus? Why not the lateral one? Can anyone tell me? ये क्यों नहीं सोचा हमने कि why not the lateral malleolus? Why the medial malleolus only? Okay. किसी के पास है आंसर? Let's take हाँ, अच्छा बताओ. Because of the anatomical position. Not because of the anatomical position. मतलब मैं समझा नहीं, anatomical position मतलब? Because midline जो है वो medial malleolus के पास में जाएगा. Okay. हाँ, somewhat it is correct. हाँ, मतलब you can say कि person जब weight bear कर रहा है, if we talk about two bones of the lower part of the leg, the tibia and the fibula, on which bone do we bear our weight? Is it Tibia. the tibia or the fibula? It is the tibia, na? It means कि fibula doesn't participate in the weight bearing. And if you talk about the medial and the lateral malleoli, the tibia makes the medial malleolus and the fibula makes the lateral malleolus. I hope everyone is clear about the malleoli. हाँ. Yes, sir. ठीक है, देखो ये चीज़ है. हाँ, ओके. देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा दिस इज द लैटरल मैल्यूलस विच इज अ बिट डिस्टल टू द मीडियल मैल्यूलस. मीडियल मैल्यूलस हमारा जो बन रहा है दैट इज मेड बाय द डिस्टल पार्ट ऑफ द टीबिया. लैटरल मैल्यूलस इज मेड बाय द डिस्टल पार्ट ऑफ द फिबुला. वी डोंट बेयर एनी वेट ऑन द फिबुला. तो ऑफ कोर्स वी आर सपोज टू मेजर द लेग लेंथ बाय मेजरिंग द लेंथ अप टू द मीडियल मैल्यूलस, नॉट द लैटरल वन ना.
ठीक है। लैटरल से हम करके कर क्या लेंगे, बिकॉज लैटरल पे तो कोई वेट बेर हो ही नहीं रहा है, हम वेट बेर तो हमारा किस पे, मीडियल मैल्यूलस पे, या फिर हम कह सकते हैं टीबिया पे हो रहा है। इट मीन्स कि एनी डिफरेंस in the distance between, you can say, the ESIS or the umbilicus up to the medial malleolus, that will make a big difference na. So it means that is the reason why we are hmm? But we are measuring uh, the length in supine position. हाँ, we measure it, but of course after that the person has to come into weight bear ना। person का weight हम leg length difference क्यों measure करेंगे, because there might be some, you can say, biomechanical differences जिसकी वजह से person में pain arise हुआ है, जिसकी वजह से person हमारे पास आया है। तो अब है ना, तो अब हमें leg length difference measure करना है, leg length difference हमें मिला, तभी तो हम बोल सकते हैं कि नहीं कि हाँ ये बायोमैकेनिकल डिफरेंस देखने को मिला है, जिसकी वजह से आपका आपका सो एंड सो टाइप का जो भी है, मतलब चेंजेस देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से ये पेन जो है वो अराइज हो रहा है। तो इट मीन्स कि तो उसके बाद तो पर्सन वेट वेरी करेगा ना, ठीक है। तो इसलिए हमें मेजर करना है विद द मीडियल मैल्यूलस, ठीक है। आई होप एवरीवन गॉट दिस पॉइंट बाय द मीडियल मैल्यूलस। यस सर। ठीक है, सर ओके। now the thing is कि we have got two different type of leg length ना, एक होता है true leg length difference, दूसरा होता है apparent leg length difference। and इसमें भी एक बहुत interesting चीज़ है, that true leg length difference we measure it from, आपने बताया था अभी कहाँ से कहाँ तक? ASIS to medial. हाँ, malleolus. ASIS to the medial malleolus, and the apparent one from Umbilicus to medial malleolus. from umbilicus to medial malleolus. So now the thing is, first of all, true leg length difference we can see in the cases when there is, let's say, any fracture of the bone, let's say इसी image पे आ जाते हैं एक बार। let's say if there is any pathological fracture ना, कोई bony infection हुआ ना, because of any pathogen, and because of that, let's say a particular segment of this bone got lost, and in that case as a whole the length of this limb got decreased है ना। or let's say if there was any fracture because of any other reason, because of any trauma, and because of any force, and because of that जो fragments है, the fractured fragments, the proximal and the distal fractured fragments, they disaligned है ना, वो अपने alignment से अलग अलग position में चले गए, and because of that again we can see the whole length of this limb will decrease है ना। तो we can say because of any injury or something to the bones, we can see the whole length of the bone is of the limb is decreasing, that is called as true। and in that case of course we will see actual difference between both the legs ना, दोनों limbs के बीच में there will be an actual difference, and that is called as true leg length difference। अब apparent leg length difference क्या है? तो apparent leg length difference में we will see there is no actual leg length, मतलब actually दोनों leg की जो length है that is equal, but we can see because of any muscle imbalance or something where we can see the pelvis is not in the neutral position है ना। let's say हमारी एक muscle होती है that is called as QL, that is quadratus lumborum, that is attached on the iliac this thing on the iliac wing, and on the inferior most you can say inferior surface of the 12th rib. So we have got this muscle, let's say that muscle got into shortening, and because of that the pelvis was not in the neutral position, and because of that we can see a difference. So when the person is in the supine lying position, or let's say in the prone lying position, we can measure the difference between the medial malleoli of both the legs, and हम देख सकते हैं कि there is a big difference that we can see। but if we have a look at the length of both the legs, दोनों की length equal है, so it is because of the imbalances in the muscle, you can say the muscle, some of the muscles which have gone into weakness, and some muscles which have got into shortening, because of that we will see the pelvis is not in the neutral position, and because of that we can see a difference in the length of both the legs, and that is called as apparent leg length difference। सबको डिफरेंस समझ आया? ट्रू लेग लेंथ डिफरेंस एंड apparent leg length difference का यस सर। मतलब किस किस केस में, हाँ किस किस केस में हो सकता है, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि हम मेजर किस तरह से, मतलब हम दोनों को कंपेयर करते हैं ना, वी जस्ट कंपेयर, लेट्स से द पर्सन इज इन द सुपाइन लाइंग और इन द प्रोन लाइंग पोजीशन, वी जस्ट प्लेस, लेट्स से अगर हम अपना थंब दोनों हैंड का या फिर कोई भी फिंगर है ना, दोनों के मीडियल मैल्यूलस के ऊपर हम प्लेस करते हैं, एंड देन वी सी कि कौन सा वाला हमारा ज़्यादा प्रॉक्सिमल है, कौन सा वाला ज़्यादा डिस्टल है, ठीक है। एंड द गोल्डन रूल इज़ दैट वी नीड टू हैव अ लुक एट जस्ट अबव द स्ट्रक्चर, मतलब इसके जस्ट 90 डिग्री ऊपर से हमें देखना चाहिए, बिकॉज इफ़ यू आर हैविंग अ लुक एट इफ़ यू आर हैविंग एन ऑब्लिक व्यू, लेट्स से हम ऑब्लिक लिखा यहाँ से अगर हम देख रहे हैं,
तो देयर कैन बी अ स्कोप ऑफ एरर ना, तो इसलिए वी नीड टू हैव अ लुक जस्ट अबव दिस स्ट्रक्चर ना, इसके जस्ट ऊपर से हमें देखना है, and then we need to place the fingers of the right and the left hand, a particular finger or a thumb on the medial malleoli, and then we can see whether anyone is a bit proximal or distal, ठीक है, and then we can figure out कि दोनों में अगर कोई length हमें देखने को मिल रही है, then we can see that okay there is a difference between both the legs, then we can measure the length, first of all the true leg length difference and then the apparent leg length difference. So we can figure out whether there is an actual difference between both the legs, or if there is any difference because of any tilt in the pelvis or because of any muscle imbalances, ठीक है. So likewise we can call it as a true leg length difference if there is actual difference in each length, in the length of each leg as compared to the another one, or we can say it is an apparent leg length difference if there is any muscle imbalance, ठीक है, because of that. ओके, आई होप यहाँ तक हमें समझ आया डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड अपरेंट. ठीक है, अब नाउ द थिंग इज कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि लेट्स से इफ अ पर्सन हैज़ अ ट्रू लेग लेंथ डिफरेंस, लेट्स से देयर इज अ फ्रैक्चर एट द फीमर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट द लेंथ ऑफ दिस लेग गॉट डिक्रीज्ड एज कम्पेयर टू दिस वन. तो ठीक है, हमें समझ आता है कि इफ़ वी मेजर इट फ्रॉम द ASIS up to the medial malleolus, both the sides, the length on the affected side will be less than this one, and we can easily say that is a true leg length difference. But if we try to measure it from the umbilicus, again तो ये difference हमें देखने को मिलेगा ना, तो then how can we say कि measuring it from the ASIS up to medial malleolus is a test for measuring the true leg length difference. अगर हम same length अगर हम इसको umbilicus से medial malleolus तक अगर measure करते हैं, I think मेरे ख्याल से common sense तो ये बोलता है कि तब भी तो हमें difference देखने को मिलेगा. आप लोग क्या बोलते हो, आपको लगता है कि अगर हम अम्बलाइकस से मीडियल मैलोलस तक अगर मेजर करते हैं, लेकिन अगर इफ देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ दिस बोन जिसकी वजह से ट्रू लिम्ब लेंथ डिफरेंस हुआ है, तो अगर हम अम्बलाइकस से मेजर करते हो तब क्या हमें डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा? तब भी तो मिलेगा डिफरेंस देखने को. मिलेगा सर. हाँ मिलेगा सर, देख मिलेगा ना. डिफरेंस. किसी ने क्वेश्चन पूछने की सोचे नहीं कि कि अम्बलाइक कि ऐसा क्यों होता है. आई थिंक दिस इज द प्रॉब्लम विद अस कि हम क्वेश्चन मतलब बुक में ठीक है जो लिखा हुआ है वो गलत भी तो हो सकता है, ज़रूरी थोड़ा ना कि वो ठीक ही हो. ठीक है, जस्ट क्वेश्चन इट कि अम्बलाइकस से मेजर कर रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि ना, इसको जस्ट टेक इट एज अ होमवर्क. आप लोग एक बार फिगर आउट करो कि ऐसा हम किस तरह से कर रहे होंगे. इसको हम कल डिस्कस करते हैं. दिस इंटरेस्टिंग है. Yes, sir. है ना कि हमने तो बुक में जो लिखा हुआ उसको हमने क्वेश्चन कर दिया कि आई थिंक मेरे ख्याल से अगर कॉमन सेंस अगर ये बोलता है कि अगर हम अम्बलाइकस से अगर मेजर करते हैं मीडियल मैलोलस तक तब भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा. तो हाउ कैन वी सी कि मेजरिंग दिस थिंग इज़ फॉर द अपरेंट लिम्ब लेंथ डिफरेंस. ठीक है, तो ये चीज़ आप सब एक बार देखना एंड देन वी विल डिस्कस दिस टुमारो. ठीक है, जस्ट मेरे को जस्ट रिकॉल मी टुमारो कि वी विल डिस्कस दिस. ठीक है, बिकॉज दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट. आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं. यस सर. ठीक है कि हाउ will there be any difference in the distance, you can say, if we measure the distance between the umbilicus and the medial malleolus, if there is a true limb length difference. Of course there will be difference, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि there will be a difference, but फिर हम कैसे बोल पा रहे हैं कि सिर्फ measuring from the ASIS up to medial malleolus is for the true limb length difference and not this thing. ठीक है, तो एक बार ये चीज़ सब देखना एंड इसको हम कल डिस्कस करते हैं प्रॉपरली. ठीक है, इट मीन्स देर इज सम कन्फ्यूजन, इसमें कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है. ओके ठीक है, एक बार हम यहाँ पे आ जाते हैं. नहीं यहाँ नहीं. ओके कहाँ थे हम. हाँ ठीक है, हमें अभी तक ट्रू एंड अपरेंट लिम्ब लेंथ डिफरेंस समझ आ गया, बट वाई वी मेजर इट फ्रॉम ASIS एंड नहीं मतलब if there is a true leg length difference, in that case if we measure it from the umbilicus up to the medial malleolus, उस केस में भी तो हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा. तो हाउ कैन वी से कि मेजरिंग इट फ्रॉम द umbilicus to the medial malleolus is only for the apparent limb length difference and not for the true limb length difference. ठीक है, ये क्वेश्चन है. ठीक है, ये क्वेश्चन आप सब देखना इसका आंसर. if you want you can just ask your, अगर इन केस अगर यू कैन आस्क योर टीचर्स एज वेल इफ़ दे कैन आंसर. ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चंस आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग से निकलते हैं. जब आप लोगों से ब्रेन स्टॉर्म करते हो ना, जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्वेश्चन बुक में जो लिखा हुआ उसको जब क्वेश्चनिंग करते हो उसके अगेंस्ट, उसके बाद ऐसी चीज़ें निकल के आती है कि ऐसा क्यों लिखा गया है बुक में. ठीक है, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि ऐसा क्यों होगा, देन वी विल सी कि इसको टुमारो वी विल सी कि इसका आंसर क्या है. ठीक है,
Okay, now let's come to the pelvis, to the pubis. ठीक है, तो we have talked about the ilium till now. I hope we are clear with the ilium. इलियम का Yes, sir. सरफेस, ठीक है, बॉर्डर सरफेसेस हमने बात कर ली, अपर लोअर बॉर्डर हमने बात कर ली है, एंड आर्क्यूएट लाइन एंड ऑरिकुलर सरफेस एंड ऑल दोस थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट. राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बोन ओनली. ठीक है, अभी हम कोई मसल वगैरह अटैचमेंट की बात नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत हमने एक दो देख लिया, बट नॉट मच वी आर टॉकिंग अबाउट द मसल अटैचमेंट. ओके, वो हम एक बारी में कवर कर लेंगे जब हम लोअर लिम्ब मसल्स पढ़ेंगे. ओके, if we have a look at the pubis, the pubis and ischium have comparatively simple body structure. मतलब simple structure है pubis and ischium का, and we can say that the structure of the pubis and the ischium are more or less same. तो we can see here. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, if we talk about the pubis, तो pubis हमारा ये, it is first of all it is present on the ventral aspect of the pelvis, है ना, pelvis के ventral aspect पे है. We have got this structure that is called as the pubic body. This is the superior ramus, and यहाँ तक कहीं हमारे पास एक inferior ramus होता है, कहीं यहाँ तक. ठीक है, ramus means branch. ठीक है, तो a branch superiorly, a branch inferiorly. ठीक है, this particular part is called as this is called as the pubic body. This is called as the superior branch or the superior pubic ramus, and this is called as inferior pubic ramus, somewhat till here. After that we can see this is the part of the ischium. ठीक है, this is the inferior ramus of the ischium. ठीक है, and this region is called as the conjoint ischiopubic eminence. इसको हम ischiopubic eminence बोलते हैं. Of course, between the eminence or the attachment between the ischium and the pubis, that is called as ischiopubic eminence. ठीक है, एंड दिस इज द inferior ramus of the pubis of the ischium. ठीक है, ये हमारा inferior ramus of ischium है, एंड ischium का बॉडी वगैरह चलो वो हम आगे देखते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं द बॉडी ऑफ द pubis, द superior ramus एंड द inferior ramus. ठीक है, ओके, तो ठीक है, ये हमें समझ आ गया द बॉडी ऑफ द pubis. एंड इफ वी हैव अ लुक एट द pubic बॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट अगर हम pubic बॉडी की अभी हम कंसर्न है. Excuse me, sir. हाँ. एक क्वेश्चन था. तनिषा You लास्ट, said अच्छा हाँ ठीक है. ventral हम्म, हाँ हाँ ventral side की bone होती है pubis. हाँ हाँ So sir, ventral means anterior. एंटीरियरली, हाँ, मतलब बॉडी के वेंट्रली एंड बॉडी के डॉर्सली, तो बॉडी के एंटीरियर, बॉडी के पोस्टीरियर. And what about volar? वोलर, देखो ये टर्म्स ना हम यूज़ करते हैं जब हम व्हेन वी आर यूजिंग व्हेन वी टॉक अबाउट हैंड, तो वहाँ पे मेजरली मतलब पाम के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम प्लांटर साइड ऑफ द फुट के बारे में बात करते हैं, देन वी मोर लेस वी यूज़ द टर्म वोलर एंड दूसरा क्या होता है, वोलर एंड डॉर्सल ही बोलते हैं. हाँ, वोलर एंड डॉर्सल, तो देन वी यूज़ द टर्म वोलर एंड डॉर्सल वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास एक प्लेट होती है इन द डिजिट्स, दैट इज कॉल्ड एज वोलर प्लेट. तो वहाँ पे अगेन देर इज़ नो क्लियर डिस्टिंक्शन between these terms, लेकिन मोर कॉमनली वी यूज अ सर्टन टर्म इन एट अ पर्टिकुलर रीजन. तो इसलिए हम जब हैंड में बात करें तब देन वी आर यूजिंग द टर्म वोलर. ऐसे नॉर्मली ये चीज़ मैंने मतलब वो नोटिस किया कि अगर हम किसी रीजन के आस्पेक्ट में, लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वी कैन से, एंड एक ये स्ट्रक्चर है एंड दूसरा ये स्ट्रक्चर है, तो वी कैन से इस स्ट्रक्चर के एंटीरियरली हमारे पास ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. ठीक है, तो मतलब एक स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में हम दूसरे स्ट्रक्चर की प्लेसमेंट की बात करते हैं कि वो उसका प्लेसमेंट कहाँ है. देन वी से दैट दिस स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट एंटीरियर टू दिस स्ट्रक्चर. एंड हम जब वेंट्रल एंड डॉर्सल टर्म यूज़ करते हैं तब हम एक ही स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, उसी का एक एंटीरियर वाला एस्पेक्ट दैन दूसरा पोस्टीरियर वाला एस्पेक्ट, तब हम ज़्यादा टर्म यूज़ करते हैं वेंट्रल डॉर्सल. बट अगेन देर इज़ नो क्लियर डिस्टिंक्शन इन सब के बीच में. आप एंटीरियर पोस्टीरियर भी टर्म यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, बट ज़्यादा कॉमनली इस तरह से मतलब एक ट्रेंड है जिसमें यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, Okay, sir. ओके. Yes. ठीक है, तो अब हाँ, तो वी हैव गॉट दिस प्यूबिक बॉडी में वी कैन से दैट ठीक है, इट इज यू कैन यूज द टर्म इट इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट, और यू कैन से ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द you can say it is present anterior to the sacrum, और you can say it is present on the ventral aspect of the pelvis, या फिर आप interchangeably यूज़ कर लो तो कोई इसमें इशू नहीं है. ओके, तो वी कैन तो हाँ, तो इट मीन्स की pubic body, the medial side of both the pubic bodies, they make the pubic symphysis. ये तो हमें पता है, the pubic symphysis. And also we can see, if right now we are talking about the pubic body only, so here we can see we have got this crest that is called as pubic crest, and यहाँ पे एक tubercle है, यहाँ पे अच्छे से दिखाया हुआ है, एक हमारे पास ये region है that is called as the pubic crest, and this particular eminence that is called as the pubic tubercle. ठीक है, this is the pubic tubercle, this is the pubic crest, and this is the pubic body. ठीक है,
एंड ठीक है, प्यूबिक क्रेस्ट पे वी विल फिगर आउट कि वी हैव गॉट सर्टेन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। लेट्स से मैंने एक टर्म यूज़ किया था इनग्वाइनल लिगामेंट। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इनग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर वी हैव गॉट द इंसर्शन ऑफ psoas minor, So, है ना, psoas minor का insertion is on the inguinal ligament. Inguinal ligament has its attachment between the pubic tubercle and the ASIS. इन दोनों के बीच में ना इस तरह से हमारा एक ये प्रेजेंट होता है इन लिगामेंट, इट इज कॉल्ड एज इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, प्यूबिक ट्यूबरकल एंड ASIS के बीच में, ठीक है। एंड वी विल सी कि आगे जाके कि मतलब जो जो इनग्वाइनल लिगामेंट है दैट पार्टिसिपेट्स टू मेक द फिमोरल ट्राइंगल एज वेल। तो फिमोरल ट्राइंगल हमारा कुछ इस तरह से बनता है, उसमें सुपीरियर बॉर्डर जो है दैट इज मेड बाय द इनग्वाइनल लिगामेंट, बट वी कैन सी दैट इनग्वाइनल लिगामेंट हैज इट्स अटैचमेंट विद द pubic tubercle and the ASIS. So we can see that apart from that we have got various muscle attachments also here, like pectineus का हमारा pubic crest के साथ में attachment होता है, ठीक है। तो we have got the pubic crest, we have got the pubic tubercle and we have got the pubic body which has got three surfaces, the anterior surface, the medial surface and the posterior surface, है ना। देखो द एंटीरियर, द पोस्टीरियर एंड द मीडियल, आई थिंक ये चीज़ हमें क्लियर है। एंटीरियरली जो कि हम देख सकते हैं ये वाला सरफेस, लाइकवाइज वी हैव गॉट द पोस्टीरियर सरफेस दूसरे पीछे वाली साइड पे, एंड वी हैव गॉट द मीडियल। देयर इज नो लैटरल सरफेस बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैव गॉट वेरियस अदर बोन्स जो कि यहाँ पे अटैच है, तो देयर इज नो लैटरल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस, बट वी हैव गॉट द मीडियल एंड एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर surface of the pubic body, ठीक है। we have got a crest and we have got a pubic pubic tubercle, ठीक है। we have got a pubic tubercle and we have got a pubic crest, ठीक है। Because we are talking about this because we are going to talk about we are going to use these terms when we will be talking about the muscle attachment, because muscle attachment में हम term use करेंगे कि this muscle has its attachment on the pubic crest or on the tubercle or something, तो वहाँ पे हम ये term use करेंगे, तो वहाँ पे we must know these terms, ठीक है। Okay, so we have talked about the pubic body, the crest, the tubercle and three surfaces of the pubic body. Likewise we have got the superior ramus and an inferior ramus, ठीक है। तो यहाँ पे inferior ramus तो pubis का दिखाया नहीं, but here we can see कि नहीं दिखाया हुआ है, मतलब यही है, ठीक है। ये प्रॉपर इमेज में क्लियर हो रहा है, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस इज द इन्फीरियर रैमस, दिस इज द सुपीरियर रैमस, सुपीरियर ब्रांच एंड इन्फीरियर ब्रांच, ठीक है। एंड हाँ ठीक है, यहाँ ये हमने देख लिया। नाउ वी कैन से दैट देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्रैक्चर दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैडल फ्रैक्चर, ठीक है। हाँ, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैडल फ्रैक्चर। ये हम ऑर्थो में पढ़ेंगे, दैट ऑर्थो में वी हैव टू गो थ्रू ऑल द एपोनिम्स ऑफ फ्रैक्चर। जैसे आपको कुछ ध्यान में होगा, स्मिथ फ्रैक्चर होता है, बार्टन्स फ्रैक्चर, और क्या होता है, कॉलीज फ्रैक्चर होता है, ठीक है। और क्या क्या होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है, नाइट स्टिक फ्रैक्चर होता है। तो ऐसे अलग अलग टर्म्स, एपोनिम्स अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर को दिया गया है, तो वी मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ दोज टाइप ऑफ फ्रैक्चर। तो वो हम ऑर्थो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं देर इज़ अ टाइप ऑफ फ्रैक्चर वेयर वी कैन सी इफ देर इज फ्रैक्चर ऑफ द रैमाई ऑफ द प्यूबिस, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे अगेन सेम इमेज है, आई थिंक ये तो हमें देखने की जरूरत नहीं। ये हमारा प्यूबिक बॉडी है, ये सुपीरियर रैमस है, इन्फीरियर रैमस है। हाँ, सुपीरियर रैमस पार्टिसिपेट्स टू मेक द पार्टिसिपेट्स इन द एसिटाबुलम एंड मेक्स 1/5 ऑफ द एसिटाबुलम। ये इमेज अगेन ये प्रॉपर इमेज नहीं है। इलियम मेक्स 2/5, इशियम मेक्स 2/5 एंड प्यूबिस मेक्स ओनली 1/5 ऑफ द एसिटाबुलम। एंड हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट स्ट्रैडल फ्रैक्चर। तो इन केस इफ देयर इज any fracture of the pubic rami, that type of fracture is called as straddle fracture, ठीक है। यहाँ पे टर्म कहीं पे यूज आई डोंट नो किया है कि नहीं किया, कहीं पे यूज किया तो straddle fracture तो I guess जब superior और inferior rami दोनों फ्रैक्चर होता है तब बोल। हाँ, दोनों का फ्रैक्चर होता है, दोनों का फ्रैक्चर होता है ऑफ द सुपीरियर एंड इन्फीरियर रैमाई। तभी हम टर्म रैमाई यूज़ कर रहे हैं ना, कि तब ना हम रैमस बोलते हैं, तो प्लूरल इज रैमाई, तो हम टर्म यूज़ कर सकते हैं द इफ देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ द रैमाई ऑफ द प्यूबिस, इन दैट केस वी से दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैडल फ्रैक्चर, ठीक है। एंड यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि हीलिंग कैन बी एक्सपेक्टेड विद इन 6 to 8 weeks। कैन एनीवन टेल मी कि वाई 6 to 8 weeks? 6 to 8 weeks में हीलिंग कैसे एक्सपेक्ट मतलब हम कर सकते हैं? हम क्या देखना चाह रहे हैं 6 to 8 weeks में? एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ exactly, callus formation na, and the patient are encouraged to fully weight bear straight away. So after 6 to 8 weeks when there is callus formation, only after that we can say now the person is we can ask the person to bear weight, and now we can see there is healing that is expected, or we can see this healing, or you can say the callus that is bridging the fractured region na. And callus is the, ये मैंने शायद बताया था ना, callus is the first stage of fracture healing that is visible radiologically ना, that is visible under x-ray,
उससे पहला पहला स्टेज जो होता है दैट इज नॉट विजिबल, ठीक है। तो 6 to 8 weeks एंड दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैडल फ्रैक्चर। यहाँ पे कहीं टर्म यूज़ नहीं किया क्या, कि किया है, आई डोंट नो, जो भी है। तो आप स्ट्रैडल फ्रैक्चर नोट कर लो नाम, स्ट्रैडल फ्रैक्चर दैट इज द फ्रैक्चर ऑफ बोथ द रेमाई ऑफ द प्यूबिस, ठीक है। ओके, लाइकवाइज इफ यू टॉक अबाउट द ईशियम, तो ईशियम में सबसे पहले वी कैन सी ऑफ कोर्स the upper part of the ischium that participates to make 2/5 of the acetabulum, the lower part of the ischium that is called as ischial tuberosity, ठीक है। I think almost everyone has experienced this thing that if we are sitting on a hard surface, एक hard surface के ऊपर अगर हम बैठे हैं for a long period of time, after some time we see that we feel that there is some bone which is pinching, है ना। तो that is called as ischial, that is the ischial tuberosity. तो when we sit down, it is the ischial bone only and it is the ischial tuberosity on which we sit actually, ठीक है। तो this particular bone on which we sit, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज, हाँ ठीक है, that is this particular bone that is called as the ischial tuberosity, ठीक है। and upper part of the ischium it participates to make the 2/5 of the acetabulum, ठीक है। lower end ischial tuberosity, upper end by the acetabulum, ठीक है। and ठीक है, and we can say that the ischial tuberosity is actually the lowermost region, the lowermost part of this ischium bone, that is called as ischial tuberosity. This is the body of the ischium, this is the superior ramus, participates to make the acetabulum, the inferior ramus, and eventually it makes the conjoint ischiopubic eminence, the ischiopubic eminence, this particular region where we can see both the bones they attach to each other, ठीक है। that is the ischiopubic eminence. So we can talk about the conjoint ischiopubic eminence, this region and the body, ठीक है। the body is simply the body region, ठीक है। the body के बाद we have got the superior ramus and the inferior ramus, ठीक है। and हाँ, now the important thing is when we talk about the body of the ischium, we have got two ends, ठीक है। दो end तो हमने बात कर ली, of course two ends are one is the upper end and another one is the lower end, but we are supposed to talk about three borders and three surfaces. So here we can see we are concerned with the ischium, with the body of the ischium. तो here we can see first of all we have got three borders कौन कौन से, ये पूरे इनॉमिनेट बोन्स का, दिस इज द एंटीरियर एस्पेक्ट, दिस इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ठीक है। तो हियर वी कैन सी दिस बॉर्डर, दिस पर्टिकुलर बॉर्डर that is the anterior border of the ischium. Right now can anyone tell me, we are having a look at the lateral part or the medial part of this innominate bone? Lateral We are looking part. at the lateral part, ठीक है, because we can appreciate the acetabulum here, ठीक है। तो we can say that this is the anterior border. We can see another this border here, ठीक है। यहाँ पे it is not properly visible, but we can simply see that we have got another border that is present here, that is called as the lateral border, and then we have got another border on the posterior side that is called as the posterior border. So we have got an anterior border, a lateral border, and a posterior border, ठीक है। an anterior border and posterior border and the lateral border. And likewise we can talk about three different surfaces, a surface between anterior border and the lateral border, that is supposed to be this particular surface, that is called as femoral surface. इसको anterior surface मत बोलना, this is called as femoral surface. Which surface? The surface between the anterior border and the lateral border, this particular surface, that is called as femoral surface. Why femoral surface? Because of course we have got the head of femur present here, and then we can see the shaft, and then the neck of the femur and the shaft they pass through this particular surface of the ischium, and that's why we call this surface of the ischium between the anterior and the lateral borders as the femoral surface of the ischium, ठीक है। Likewise we can call the surface between the lateral and the posterior borders, lateral border and posterior border के बीच में जो surface है, that is called as posterior surface. And we have got another surface on the medial side, उस side पे ना, between the posterior and the anterior, that is called as medial or the pelvic surface, that is called as the pelvic surface, ठीक है। We have got the dorsal surface जो कि यहाँ पे present है between the lateral and the posterior borders. We have got the femoral surface between the anterior and the lateral border, and we have got a pelvic surface on the inner side, on the medial side, ठीक है, that is between the anterior and the posterior surfaces, उस side पे जो कि हमें visible नहीं है इस side से, ठीक है। ठीक है, I hope we are clear till now. इसको अगर हम यहाँ, ठीक है, यहाँ से याद करने से बेटर है हम इमेज से याद करें, बिकॉज सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एंटीरियर एंड लैटरल के बीच में हमारा फिमोरल सरफेस है ये सब, लेकिन यहाँ पे इट माइट बिकम कंफ्यूजिंग, तो इसको ट्राई टू फिगर आउट इस इमेज से, ठीक है। एंड यहाँ से वी कैन इजीली फिगर आउट कि कौन कौन से बॉर्डर के बीच में कौन सा सरफेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके, यस सर। ठीक है, ओके, अभी हम इस लिगामेंट्स पे आ जाते हैं, बट आई होप टिल नाउ वी आर क्लियर विद द सरफेसेस, विद द स्ट्रक्चर्स। हमारा प्यूबिस एंड इशियम तो बहुत सिंपल है, जस्ट सिंपली एक बॉडी है,
सुपीरियर इन्फीरियर रेमस प्रेजेंट है एंड लेकिन इसके अलावा अब नाउ देयर आर सर्टेन टर्म्स लाइक ट्यूबरकल है ना, इशियल ट्यूबरोसिटी हमारे पास प्रेजेंट है एंड इसके अलावा कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज है दैट वी नीड टू रिमेंबर लाइक हमारा प्यूबिक क्रेस्ट हो गया एंड प्यूबिक ट्यूबरकल्स हो गया, लेकिन इसके अलावा इट इज़ मोर लेस सिंपल एंड बिफोर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द इलियम एज वेल. ठीक है. Now, the last thing that we are supposed to talk about is are the two ligaments, the sacrospinous ligament and the sacrotuberous ligament. अगर सबको याद हो, हमने स्टार्टिंग में जब इलियम की बात करी थी, we talked about these two notches. Can anyone tell me the name? ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, but can anyone tell me the name of this notch, this and this notch? हाँ. lesser sciatic. This is the greater sciatic notch and this is the lesser sciatic notch, है ना? And this is called as ischial spine, ना? Fine. हाँ, this is the ischial spine. ठीक है, this is the ischial spine and then we have got this structure that is called as ischial tuberosity. ठीक है, this is ischial tuberosity ना, ये तो pubis है, ये pubis है anteriorly, है ना. ventrally हमारे पास present है, ये हमारा क्या कहते हैं, this is the ischial tuberosity and this is called as ischial spine. ठीक है. Now the ligament, we can see both the ligaments, the sacrospinous and the sacrotuberous, both the ligaments having their attachment on the sacrum. ठीक है. एंड दूसरे अटैचमेंट की अगर हम बात करें तो वी कैन से दैट सैक्रोस्पाइनस, इट मीन्स वन अटैचमेंट इज ऑन द सैक्रम एंड अनदर अटैचमेंट इज ऑन द स्पाइन. स्पाइन कौन सा? इशियल स्पाइन. ठीक है. एंड दैट इज द सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट एंड दूसरा जो लिगामेंट है दैट इज सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट बिटवीन द सैक्रम एंड द इशियल ट्यूबरोसिटी, दिस वन. ठीक है, ये इसी का कंटिन्यूशन है जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. ठीक है, दैट इज द इशियल ट्यूबरोसिटी, दैट इज सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस. आई होप वी आर क्लियर विद दीज टू लिगामेंट्स टिल नाउ, सैक्रोट्यूबरस एंड सैक्रोस्पाइनस. ठीक है. ओके, अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि ऑफ कोर्स वी कैन सी कि हमारे पास दिस वाज द ग्रेटेस्ट शियाटिक नॉच, दिस वाज द लेसर शियाटिक नॉच. नाउ बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज टू लिगामेंट्स ऑल्सो we have got, we can see now these notches they have converted into a fossa, एक proper fossa like structure में convert हो गया है because of the introduction of these ligaments. And now we call this as sacrospinous नहीं sorry, greater sciatic foramen and this is called as the lesser sciatic foramen. ठीक है. Can anyone tell me the name of this foramen? Properly visible नहीं है लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं. हाँ, this is obturator, this is the obturator foramen ना. दिस इज द ट्यूबरकल, नहीं मैं फोरामेन की बात कर रहा हूँ. फोरामेन हमारा ये जो फोरामेन जो स्पेस प्रेजेंट है ना, इस स्पेस को हम फोरामेन बोलेंगे ना. जैसे हमने फोरामेन की बात करी थी वहाँ पे भी, फोरामेन मैग्नम जो कि हमारे एक रीजन में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम फोरामेन कहते हैं ना. तो लाइकवाइज वी कैन टॉक अबाउट दिस स्पेस दैट इज कॉल्ड, दैट इज द फोरामेन, दैट इज ऑब्टरेटर फोरामेन. लाइकवाइज वी कैन टॉक अबाउट दिस फोरामेन मेड बाय द ग्रेटर शियाटिक नॉच एंड द सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट दैट इज कॉल्ड एज greater sciatic foramen. Likewise by the lesser sciatic notch and the sacrotuberous ligament that is called as lesser sciatic foramen. I hope till now we are clear. We have talked about three foramen: greater sciatic foramen, lesser sciatic foramen and the obturator foramen. यहाँ तक clear है? Yes, sir. ठीक है. Okay. Now we can see, we will talk about this, but we can see there are various different structures which are passing through the greater sciatic foramen, some passing through the lesser sciatic foramen. जैसे कौन सी होती है, there is this nerve that is called as the pudendal nerve. एक nerve होती है that is called as pudendal nerve. तो pudendal nerve we can see it passes through both the structures. It first passes through the greater sciatic foramen, then re-enters the lesser sciatic foramen, that is called as pudendal nerve. Likewise we can talk about the sciatic nerve. Sciatic nerve हमारी pass करती है through the greater sciatic foramen. ठीक है. We have got this inferior gluteal nerve that passes through the greater sciatic foramen. We have got the nerve to obturator internus which passes through the lesser sciatic foramen. ठीक है. तो ऐसे कुछ structures है जो कि हम we can see which passes through these foramen. And also we can talk about various different muscle attachments. तो we are going to talk about all these things. जब हम muscle की बात करेंगे तब हम इन structures की भी बात कर लेंगे, which are the structures which pass through this region, these foramen and also the muscles which are attached with it. ठीक है. But right now we are supposed to talk about these foramens, how they are being formed, and also the ligaments, how they are attached. ठीक है. We are clear till now? Yes, sir. Okay. And question जो मैंने पूछा that was
अगेन इफ आई रिपीटेड दैट क्या क्वेश्चन था कि हाँ if we measure from ASIS up to medial malleolus for to figure out whether there is true leg length difference. In that case, why how by measuring the distance between the umbilicus and the medial malleolus, how can we say that that is for measuring this thing apparent leg length difference and not for true leg length difference? ठीक है, मतलब अम्बलाइकस से मीडियल मैलुलस तक मेजर करने पे हाउ वी कैन से कि वो हमारा अपरेंट लेग लेंथ डिफरेंस में को हम मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे बट नॉट फॉर ट्रू लेग लेंथ डिफरेंस, ठीक है। तो बिकॉज कॉमन सेंस सेज कि हम अगर अम्बलाइकस से मीडियल मैलुलस तक अगर मेजर करते हैं तो ऑफ कोर्स देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस इफ देयर इज़ अ ट्रू लेग लेंथ डिफरेंस अगर उस लोअर लिम्ब में, तो इसलिए ठीक है। तो इसका आंसर एक बार फिगर आउट करना है, देन वी विल डिस्कस दिस टुमारो, बट जस्ट रिकॉल मी बिकॉज आई हैव दिस टेंडेंसी टू फॉरगेट थिंग्स, ठीक है। तो इसलिए मेरे को रिकॉल करना सो दैट वी कैन डिस्कस दिस टुमारो, ठीक है। ओके Yes, sir. ओके, सो लेट्स फाइंड इट अप। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. ओके Thank you. Thank you, sir. ओके।